Hi students, welcome to the ZAK English Crash Course, ZECC 101. We were learning about the singular and the plural of the nouns. We learned the 12th lessons and today is the 13th lecture, that is about how to make plurals of the single letter and single digits. So it's easy to make the plurals of the single letter and the single digits. How to make it? Let's get started. ZAK English Crash Course. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा आज का जो लेसन है, हमारा आज का जो लेसन लेक्चर है, वो लेक्चर है सिंगुलर और प्लूरल ऑफ लेटर्स और डिजिट्स के बारे में। जो लेटर्स हैं और जो डिजिट्स हैं उनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं हम ये कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। तो लेट्स सी टू द डेफिनेशन। If there is a single letter or single digit in any of the test or exam or elsewhere, how do we make its plural? हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? किसी भी एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर अगर किसी लेटर का प्लूरल बनाना हो या किसी डिजिट का प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। It's so easy to make its plural. Here we go. Definition says that all the single letters and the digits take only apostrophe s. Apostrophe s is used to make the plural of any digit or any single letter of English. Any digit or any single letter of English. For example, मिसाल के तौर पर कैसे सिंगल लेटर के साथ अपोस्ट्रोफी एस मिलाकर, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसका सिंगुलर बनाते हैं। जैसे आते हैं डिजिट्स की तरफ। डिजिट का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। जैसे सिंगल वर्ड है थ्रीज। देयर वर मेनी थ्रीज डिजिट्स वर रिटन ऑन द बोर्ड्स। देयर वर मेनी फोर्स रिटन ऑन the notice board. There were many fours written on the notice board. I don't know which was my seat number. There were many fours written on the board. Okay. Sevens. There are 100 sevens which were shown to the people, but only single person was searching that which was his seventh number. Okay. Next one is eights. Eight is singular. Its plural is eights with apostrophe s. Next one is nines. Nine is singular. Nines is its plural. 10 is singular. Tens is its plural. 20 is singular. Twenties is its plural with apostrophe s. 30 is singular. Thirties is its plural with apostrophe s. 40 is singular. Forties is its plural with apostrophe s. 50 is singular. Fifties is its plural with apostrophe s. These were the digits से प्लूरल बनाए हैं। आइए देखते हैं कि लेटर्स के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश के लेटर्स जो हैं ए से लेकर जी तक, तो इंग्लिश का जो लेटर नंबर 1 है ए, हम इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। ए जो है वो सिंगुलर है। अ इज अ सिंगुलर। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे। मोर देन 5 इज शोन ऑन द एलसीडी स्क्रीन। Bees. There are many bees. Bee is a singular. Bees is its plural with apostrophe s. So there were 5 bees written on the page. Next one is C's. C is a singular and C's is its plural. D is a singular. D's is its plural. F is singular. F's is its plural. G is singular. G's is its plural. Like that, K is singular. K's is its plural with apostrophe s. L is singular and L's is its plural with apostrophe s. Singular. M's is its plural with apostrophe s. N is singular. N's is its plural with apostrophe s. O is singular. O's are plural with apostrophe s. Like that, Q is a singular and Q's is its plural with apostrophe. In the series, T is a singular and T's is its plural and T's is its plural and U's is its plural with apostrophe s. So the students, this was all about the singular and the plural of the single digits and the single letters. See you after a short break in the next lecture. Take care. Eating.